Hello, am I audible to you? Yes, you are. Okay. Uh, as Nelson Mandela said, education is the most powerful weapon which you can use to change the world. Very good evening to all of you. I am Savraj, member of Legal Vidya. Welcome you all to our highly anticipated webinar on the topic that is close to our heart and crucial for development of our societies worldwide, that is right to education. Before we begin the webinar, I would like to introduce our organization, Legal Vidya, to you all. Legal Vidya is a platform that was founded in the year 2021 with the vision of empowering young lawyers. We conduct intensive programs, webinars, seminars, competitions, and many more. Over the last 2 months, Legal Vidya has had more than 500 interns, making a total of more than 1,000 interns in the last 8 months. We also organize weekly and daily quizzes to put your minds to the test. Further, we are organizing a second national article writing competition, and the last date is today to register. If you want to register, kindly visit our website for register. Now it is great pleasure and honor that I introduce our distinguished speaker for today's webinar on the right to education, Mr. Gurpreet Singh, an extraordinary individual who tirelessly efforts and expertise have left an indelible mark in the field of education. Throughout their illustrious career, he is an experienced advocate, consultant, researcher, and teacher. So, without further ado, let us warmly welcome our speaker to the virtual stage. We eagerly awaits the invaluable wisdom and the perspectives they are about to share with us. Now, over to you, sir. Hello, everyone. First of all, I want to thank the team of Legal Vidya for giving me this opportunity to deliver the lecture on right to education. Uh, Hello, everyone. Is this screen visible? And Yes, I'm sir. also audible. Yes, Yes. Okay. Let us start. Uh, Yes, sir, you are our audible. topic And is let us start. Right to education is our topic for today's session. Education is a fundamental right as well as human right, but in worldwide 244 million children are still out of the school for social, economical, and cultural reasons. This is a backdrop we are facing in today's world. So, first we talk about international conventions. Article 26 of UDHR 1948 states that everyone has the right to education. There are also similar provisions in Article 3 of concerning discrimination in respect to employment and occupation 1958. Also, Article 13 of International Convention on Economical, Social and Cultural Rights 1966. Article 28 and 29 of UN Convention of the Rights of Child. These provision talks about the right to education for children's all children. Now we moving ahead. Before that, we talk about these case laws. The Constitution, the framers of the Constitution realized the importance of education, and they had imposed a duty on the state under Article 45 as one of the directive policy of state to provide free and compulsory education to all children until they complete the age of
14 years within 10 years of from the commencement of the constitution. The objective was to abolish literacy from the country so education becomes the responsibility of the state. Uh, there are few case laws. The first is Mohini Jain versus State of Karnataka. In this case, Supreme Court held that right to education is a fundamental right under Article 21, which cannot be denied by charging a higher fees in the name of capitation fees. In this case, there are some issue like a petitioner has challenged the validity of a notification un- issued by the government under Karnataka Education Institute Prohibition of Capitation Fees Act. It 1984, which was passed to regulate tuition fees to be charged by private medical college in the state. इसमें बेसिकली सुप्रीम कोर्ट ने फंडामेंट राइट टू एजुकेशन को फंडामेंटल राइट का कहा था कि ये पार्ट है आर्टिकल 21 का राइट टू एजुकेशन भी। ये 1992 का केस है। इसमें जो नोटिफिकेशन एक चैलेंज हुई थी कर्नाटका एजुकेशन इंस्टीट्यूट प्रोहिबिशन ऑफ कैपिटेशन फीस एक्ट 1984 की, उस उस नोटिफिकेशन में ये था कि थ्री कैटेगरीज थी। इट प्रोवाइड्स फॉर द ट्यूशन फीस टू बी चार्ज एट द टाइम ऑफ एडमिशन। थ्री कैटेगरीज कैंडिडेट्स ऑन गवर्नमेंट सीट्स, उनके लिए जो जो फीस थी वो 2000 की थी एंड कर्नाटका स्टूडेंट्स के लिए 25,000 थी एंड स्टूडेंट्स हु आर नॉट फ्रॉम कर्नाटका उनके लिए फीस थी 60,000। ये थ्री कैटेगरीज थी। और जैसे हम इस केस की बात कर रहे हैं और पिटिशनर जो थी एक प्राइवेट मेडिकल कॉलेज में एडमिशन लेने गई थी, वो थी मेरठ यूपी से। तो इस केस में petitioner was denied admission on the ground that she was unable to pay such higher tuition fees amount. So in this case, Supreme Court held that such a notification is a violation of Article 14 and it's arbitrary, unfair, and unjustified, as the right to education is directly flows from right to life। और इस केस में फिर आर्टिकल 21 के लिए में ही इंक्लूड कर दिया था एजुकेशन को। दिस इज द फर्स्ट केस जो जिसमें ऐड किया गया। इसके बाद जो है नेक्स्ट ईयर उन्नी कृष्णन वर्सेस स्टेट ऑफ कर्नाटका का केस हमें देखने को मिला। इस केस में 1993 का केस था। इन दिस द अपर कंटेंशन जो थी कि राइट टू एजुकेशन जो है इसको रिजेक्ट कर दिया गया और कहा गया कि जो एज जो प्रीलिमिनरी एजुकेशन जो होती है एलिमेंट्री एजुकेशन सॉरी उसी को ही इंक्लूड करते हैं अप टू 14 इयर्स ऑफ एज। कोई फ्री एजुकेशन है उसके आगे नहीं है। सुप्रीम कोर्ट रिजेक्टेड द views held in Mohini Jain case and held that state is bound only till the age of 14 years to provide free education
and the private colleges are not ways bound to provide free education, but they should be allowed to run their institutes under strict regulations controls in order to prevent education sector being commercialized. The majority view was that in such institute 50% seats should be filled on the merit and rest 50 seats may be filled by charging a higher fees. Okay. After that case, a Muhiram Saiki committee was set up to examine the feasibility of the proposal in reference to Unni Krishnan case that 1993. The committee estimate an expenditure of 40,000 crore over the period of 5 years to set up the necessary infrastructure and provide books and stationery for the purpose. अ, उन्होंने जो कमेटी थी इसमें एक एस्टिमेट लगाया कि कितना पैसे लगेंगे, तो उनका जो एस्टिमेट था वो अराउंड 40,000 करोड़ का था कि इतना लगेगा अगर हम इसको एक्सटेंड करते हैं। उसके बाद हमारा अगला केस है टीएमए 2003 का। इन दिस third one case, court held that the private institute may charge a capitation fee, but that always remain in the strict regulation of the state government. एज सच हमने देखा कि ये सेकंड वाले में कहा में इनका 50% का जो था, इस वाले केस में ये भी नहीं कहा गया। उसमें कहा गया कि कैपिटेशन फीस जो है ये हम कैपिटेशन फीस कॉलेजेस ले सकते हैं, उसमें कोई बात नहीं है। These three are the landmark judgments. मोहिनी जैन वाला फर्स्ट केस था जिसमें राइट टू एजुकेशन को आर्टिकल 21 से लिंक किया गया और इसको भी एक फंडामेंटल राइट बताया गया। फिर उसके बाद हमारे पास एक 2002 में अमेंडमेंट आई थी, 86 कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट। ये इसमें बेसिकली आर्टिकल 45 जो है हमारे पास पहले भी था, पर इसमें इसको रिप्लेस किया गया। एस आप पढ़ोगे अभी ये आपके जो है ये हेडिंग मिलेगी, बट बिफोर दिस अमेंडमेंट ये इसकी वर्डिंग नहीं थी। इस आर्टिकल 45 जो है एक पार्ट 3 का है और 21 पार्ट 4 का है। आर्टिकल 21A पार्ट 3 का है और 51A पार्ट 4A का है। पार्ट 3 और 4 में यही डिफरेंस है। पार्ट 3 जो है फंडामेंटल राइट से डील करता है, पार्ट 4 जो है डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसीज से डील करता है, और आर्टिकल 51A जो है वो फंडामेंटल ड्यूटीज से डील करता है और इन्फ्रिंजमेंट ऑफ एनी राइट वी फॉर ए फंड इफ a fundamental right is infringed, we can go to the court. But if directive principle of state policy is the duty of the state, but if it is not followed or fulfilled, we can't go to the court for its enforcement. Before this amendment, Article 45 heading is provision for free and compulsory education for children.
The state shall endeavor to provide within a period of 10 years from the commencement of this constitution for all children until the completed the age of 14. इसमें completed the age of 14 है, but now it is 6 to 14. पहले जो था उसमें जो 4 और 5 इयर्स के चिल्ड्रंस हैं उनकी एजुकेशन भी कवर हो रही थी, बट अब नहीं है. अब जो ब्रैकेट है 6 to 14 इयर्स को ही कवर करता है. हम पढ़ते हैं जैसे द स्टेट शेल endeavor टू प्रोवाइड अर्ली चाइल्डहुड केयर एंड एजुकेशन फॉर ऑल चिल्ड्रंस until they complete the age of 6 years. Okay, and this and another one is Article 21A. This is included and it is the fundamental right and it is the basis of this is included by Tapas Mujumdar Committee, which was established in 1999 with the goal of inserting Article 21A. जो कमेटी थी 1999 में बनी और ये जो है इंसर्ट हुआ 2002 में, इसके बाद फाइनली इंसर्ट हो गया था. इसका बेसिकली आर्टिकल 21 जो है राइट टू लाइफ से डील करता है और 21A जो है इसमें राइट टू एजुकेशन का जो फंडामेंटल राइट दिया गया. एंड दीज केस लॉ आर इन केस लॉज में भी ये हेल्ड किया गया कि जो राइट टू एजुकेशन है फंडामेंटल राइट है और आर्टिकल 21A भी जो है राइट टू एजुकेशन फंडामेंटल राइट में डील करती है. इसके बाद आर्टिकल 51A, ये जो है पार्ट 4A का पार्ट है. पार्ट 4A जो है 42nd अमेंडमेंट से ऐड हुआ गया था हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में और ये जो है फंडामेंटल ड्यूटीज के बारे में बात करता है. और ये इसका बेसिकली पर्पस ये था कि राइट्स अगर हैं किसी के पास तो ड्यूटीज भी उसके ऊपर इम्पोज करनी चाहिए और इसमें इन्फोर्सेबल है या नहीं है ये इसका आंसर एक केस लॉ एम्स केस में दिया गया था. और ये जो है आर्टिकल 51A का क्लॉज के ये जो है इंसर्ट किया गया और ये ड्यूटी इम्पोज करी गई पेरेंट्स के ऊपर कि वो अपने वार्ड्स को पढ़ाएं जो चिल्ड्रंस हैं 6 to 14 इयर्स के बीच के. और राइट टू इसके बाद हमारे पास 2009 में एक राइट टू एजुकेशन एक्ट था जिसका नाम
right of children to तो complete पीरियड to समझते free हैं and करके compulsory education act 2009 है right of children to hello हाँ यस सर hello anyone Yes, has sir. question Yes, sir, we can hear you. sorry Continue, sir. Continue. We can hear you, sir. Continue, sir. okay आर्टिकल 21 ए के बारे में समझ आया ओके Yes, sir. right of child to free and compulsory education act this act is made and it comes into force in 1st of April 2010. This right, this act provides for the compulsory education for getting admissions also to, to get 25% reservation also to get 25 reservation to the students who belongs to weaker section for admission there will be no entrance or interview of student or children also basically they notify some standards like pupil teacher ratio that is minimum 30 teacher are there per children per student also there must be a playground for the students it was अभी रिसेंटली एक सुप्रीम कोर्ट की जजमेंट में भी आया कि प्लेग्राउंड्स जो हैं होने चाहिए हर स्कूल में सो दे कैन ग्रो मेंटली एज वेल एज फिजिकली इसमें बात करी गई है इस एक्ट में कंपलसरी एजुकेशन की और फ्री फ्री जो है इसमें किसी भी टाइप की फीस और चार्जेस हम नहीं ले सकते फीस में भी दो टाइप की नोटिफाई करी गई हैं डायरेक्ट एज वेल एज इनडायरेक्ट डायरेक्ट फीस इज admission fees or tuition fees indirect is like uniform fees or any other charges it make जब ये एक्ट बनाया गया तो इसमें एक प्रोविजन था नो डिटेंशन पॉलिसी का बट उसको रिमूव कर दिया गया 2019 की अमेंडमेंट से और इसमें सेंटर और स्टेट गवर्नमेंट्स की भी ड्यूटी करी गई कि वो प्रोवाइड करें free education who are financially not capable of fulfilling and paying the fees as well as they provide the government provides 25% reservation to the students who belongs to weaker section but there is one back but there is a one limitation of that some states not notified that rule till date और जैसे हमने आर्टिकल 21 ए में देखा था वो कवर कर रहा था 6 to 14 years के स्टूडेंट्स को हमारे पास इस जो एक्ट में है ये भी 6 to 14 को ले रहा है और उससे जो छोटे स्टूडेंट्स हैं और उस 14 के बाद जो है उनको कवर नहीं कर रहा ये एक लिमिटेशन है
और उसके बाद ये अपॉइंटमेंट का प्रोसीजर भी बताया गया। और अगर कोई स्कूल जो है फॉलो नहीं करता रूल्स को, तो उनके ऊपर एक पनिशमेंट और एज अ फाइन भी लगाया जा सकता है इस एक्ट के अकॉर्डिंगली। और ये जो है एक्ट प्रोहिबिट करता है मेंटल हरासमेंट, फिजिकल पनिशमेंट, स्क्रीनिंग प्रोसीजर फॉर द एडमिशन ऑफ चिल्ड्रन, कैपिटेशन फीस, private tuitions by the teachers, running school with no recognition. Earlier, there is a provision that no child is detained until class 8. It introduced the continuous comprehensive system in 2009 to have great appreciate learning outcome in schools. But this was removed by the amendment of 2019. Right to education is the fundamental right which the every citizen has to have. इससे फायदा क्या हुआ? This act, RT, Right to Education Act से, this increased school enrollment. The law mandated school to provide free and compulsory education for all children, and also they supported financially to help schools meet their obligation. Also, infrastructure improve हुआ, accountability increase हुई, as this law includes school monitoring and evaluation provisions and establish mechanism for resolving grievances. It reduces school dropout rates. जब ये एक्ट इनफोर्स में आ गया उसके बाद जो है ड्रॉप आउट रेट्स में भी हमें काफी कम हुआ है, जो बच्चे स्कूल से पहले ही छोड़ जाते थे। ये बेसिकली जो है स्टार्ट हुआ था रामामूर्ति कमेटी। राइट टू एजुकेशन का कॉन्सेप्ट जो था रामामूर्ति कमेटी 1990 में एक कमेटी हुई थी, उनका फर्स्ट डॉक्यूमेंट था, उसके बाद ये स्टार्ट हुआ। And now there are 3.3 million students जिन्होंने सिक्योर किया एडमिशन अंडर 25% क्वार्टर नॉर्म अंडर राइट टू एजुकेशन एक्ट। ऑल्सो there are many achievements of this, but there are 5 states: Goa, Manipur, Mizoram, Sikkim and Telangana जिन्होंने ये नोटिफिकेशन अभी भी रिलीज नहीं करी कि 25% सीट्स जो हैं अनप्रिविलेज्ड चाइल्ड्स के लिए, चिल्ड्रंस के लिए रिजर्व होंगी। ये इसका लिमिटेशन है। बट 3.3 मिलियन जो हैं
उनको इससे फायदा हुआ है और एडमिशंस हुए हैं। हमारा जो 86 कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट थी, यही एक राइट टू एजुकेशन को प्रमोट करने के लिए आगे आई। जैसे कि आर्टिकल 45 में हमने देखा, पहले जो ये अंटिल दी 14 ईयर्स था, इसको अब 6 ईयर, ये जो इसमें पीरियड था, जिसे आप देख सकते हो सेकंड लाइन में लिखा है, विद इन ए पीरियड ऑफ 10 ईयर्स फ्रॉम द कमेंसमेंट ऑफ दिस कॉन्स्टिट्यूशन। अब इसको आगे बढ़ाया गया इस पीरियड को, और आर्टिकल 21A जो ऐड किया गया, ये एक बहुत बड़ी अचीवमेंट थी राइट टू एजुकेशन को इंश्योर करने के लिए। एंड दैट्स ऑल फॉर द टुडे। थैंक यू वेरी मच। हेलो, Yes, sir. थैंक यू वेरी If मच फॉर योर काइंड। anyone have a query, kindly ask in chat box. No query. So I would like to express my heartfelt appreciation to our exceptional speakers who genuinely shared their insight, experience, and expertise throughout this webinar. Your contribution have enriched our understanding and inspire us to take meaningful action in advancing the right to education. I would like to also extend my sincere thanks to our participant for your presence थैंक and यू वेरी commitment. Thank you so much. Thank you, sir. मच। Now leave everyone. Sir, I'd like to thank you for joining our webinar and being a guest speaker. You have chosen a great topic for us, that is the right to education. This is something that we all want to थैंक यू वेरी मच। yes, it is something that that we all learn in our first, second. That is really important for every one of us to learn. You have rightly covered each and every aspect of higher education, sir. So thank you so much for joining us, and we hope we could talk with you in future as well. Thank you so much. थैंक यू। Kindly fill the feedback form. Rishabh, one second. Sir, I think there's a question in chat box. If you could please answer that query. It is from Sumit K. Singh. Rishabh, please read the question. Actually, I leave the meeting, that's why I'm not able to see the question. Okay. So, sir, the question was that the student to pupil ratio has been extended beyond schools, also like colleges, also showcase PTR. So, what is the basis of that? I guess, Sumit, could you please clarify your question a little more? That or you Yes, can. so yes, Okay. ma'am. So colleges also showcase it this is the student to teacher ratio. So is it their unique selling proposition, or has the norm been
taken beyond school framework also. Like what you said about the PTR was vis-a-vis schools only, but now also like colleges also do advertise ki their student to people ratio is such and such. So is it their unique selling proposition, or is it like the norm being continued or anything like that? Yes, there is a 30 PTR which is not notified, but it is only for schools, not colleges. As this act extends to only schools. Okay, okay. So like, is it like their own individual thing that they do rather than they are Yes, following it any is act? a voluntary. Okay, thank you, sir. Thank you. Uh, Thank you so much, sir, for joining us once again, and thank you for clarifying so much query as well. And yeah, so if anyone has any other query, do write it in chat box, or you can share with the admins of your group, or mail us at legalvidya @gmail.com, and we'll try to clarify that query, and we'll also forward the query to sir. Or if anyone wants to ask the query right now, please do type it here. If not, you're all free to leave the webinar. And once again, thank you so much for joining us, sir.